ये जो अभी आज का मैच अभी चल रहा है ना साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, ये सबसे ज़्यादा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचेस फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव। क्योंकि ये मैच आज जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का हो रहा है, इसमें अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान के 50% चांसेस क्वालिफाई करने के सेमीफाइनल में ख़त्म हो जाएंगे। आज का मैच साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। अगर साउथ अफ्रीका आज का मैच जीत गया तो पाकिस्तान की होप्स 50% जो डाई आउट होने के चांसेस हैं वो फिर डाई आउट नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो आगे आगे के दो मैच हैं उसमें एक पाकिस्तान के साथ है और एक श्रीलंका के साथ है। कम व्हाट मे, श्रीलंका मस्ट डिफीट न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड मस्ट बी बीटन बाय पाकिस्तान, एंड आइडियलिस्टिकली न्यूजीलैंड मस्ट लूज टूडेज मैच। Although I think the way it's going, मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड आज का मैच हारेगी, लेकिन ये आज का जो मैच है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ पाकिस्तान। देयर शुड बी अ लॉट दैट वी शुड बी एबल टू रीड अबाउट वेदर एक्चुअली इट्स गोइंग टू हेल्प अस इन फोरसीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। पाकिस्तान का कोई चांस है आगे के नहीं है, ठीक है, आज के मैच से पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल जो स्कोर चल रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उसमें साउथ अफ्रीका का एक आउट हुआ है जहाँ तक मैंने देखा था, और न्यूजीलैंड जो है इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक लुकिंग इन कमांड। 76 for 1 साउथ अफ्रीका, 17 overs हैव गॉन, एंड क्विंटन डिकॉक बहुत फॉर्म में है। ये इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप का सबसे डेंजरस बैट्समैन इस वक्त क्विंटन डिकॉक है। और साउथ अफ्रीका का ये अगर आउट नहीं होता तो साउथ अफ्रीका को एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पर मिल सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर न्यूजीलैंड का इस वक्त इस मैच में, क्योंकि कहते थे कि केन विलियमसन इज़ गोइंग टू रिटर्न बैक टू न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। आई एम नॉट रियली टू श्योर वेदर केन विलियमसन इज़ टुडे प्लेइंग और नॉट। इट्स लाइनअप में डेवन कॉनवे, विल यंग, डैरल मिचेल, टॉम लेथम। अच्छा, तो केन विलियमसन इज़ नॉट प्लेइंग टुडे, विच एक्चुअली मीन्स न्यूजीलैंड फिर भी टॉप साइड है, मतलब केन विलियमसन और नो केन विलियमसन, न्यूजीलैंड इज स्टिल, आई डीम इट टू बी अ वेरी वेरी top side. However, South Africa has to win today's game. If South Africa will not be able to win today's game, it will be kind of like, if New Zealand wins today from South Africa, 50% of the chances of Pakistan will diminish, because then New Zealand will move into the next two matches with utmost motivation to play against Pakistan and Sri Lanka. पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड ने हरा दिया अगला मैच, तो पाकिस्तान तो फिर आउट ही हो जाएगा ना वर्ल्ड कप से, वो तो आउट ही हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म। श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए या ना हराए फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जो है वो आज का मैच हारती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आज का जो साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड का हो रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। और I just hope that South Africa beats New Zealand. Unfortunately, we have reached a point whereby Pakistan's fate in such a tournament is definitely going to be decided by, it's going to be decided by how other teams play against, other teams in their respective matches. It's really going to boil down to some bad performances by a few teams, and one of the teams that we expect to perform badly today is New Zealand, and we expect New Zealand to perform badly against Pakistan, of course against us, which is where Pakistan is definitely the next two games for Pakistan are a must win, of course, and with a good run rate as well. But unfortunately, it always happens like this. Pakistan is a team that shows pathetic and stupid performances, but at the end of the day they have to rely on bad performances shown by other teams, which is why Pakistan, I'm not saying, of course, by no standard is Pakistan a deserving team to qualify for the final of this World Cup or even for the final of the previous World Cup which took place in 2022.
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान एज अ फाइनलिस्ट डिजर्व नहीं करता था। ये क्या तरीका हुआ कि एक बकवास पैथेटिक परफॉर्मेंस आपने शो किया आपने एक टूर्नामेंट में, और उसके बाद आपने एक दूसरी टीम ने अपसेट कर दिया, तो आप उसकी वजह से आगे निकल गए रन रेट से। ऐसे नहीं, फाइनलिस्ट जो होती हैं ना टीमें, वो ऐसे नहीं आगे जाती होती। वन हैज़ टू रियली डिजर्व द स्पॉट इन द फाइनल। डजंट मैटर हु विन्स, यू आर इन द फाइनल, you have to be a good team. Final of any tournament for that matter. So, talking about Cricket World Cup of 2023, this is the highest level of cricket right now. It is the highest level of cricket as far as ODI cricket is concerned. It is bigger than the T20 World Cup. It is bigger than any ODI match that is played between any teams, any two teams, or it's basically the optimum level of ODI cricket. So it is the highest level of ODI. It is the highest level of cricket as far as one-day cricket is concerned. ODI internationals are concerned. But for Pakistan, it is very important that today's match is won by South Africa, and South Africa is batting first. New Zealand are very good chasers. On this wicket, I'm not really too sure what kind of a score is going to be enough for them to defend this total. From South Africa's perspective, would they be really wanting to win this game? Because they're already through to the semi-finals. I mean, they're not through in the literal sense, but if you basically just take a look at the table, South Africa at this moment, it's probably not showing me. Okay, so I probably just need to probably just go and. It's not showing me. Okay, I do have the link over here. South Africa is number 2 at this moment in time on the table, and it's got 10 points. It's already there at number 2. New Zealand is at number 3 right now, looking good, but the matches up ahead for New Zealand are quite tough. So, South Africa at this moment in time, it's not a must-win for them, even to qualify for the top 4. But as I said, it's important for the semi-finalists of this particular World Cup to finish at that, at number 1, because this is actually a contest of finishing at number 1, because then you finish on a high, and then the other team that is going to finish on number 4, you might want to maybe, in my opinion, maybe South Africa and India would want to finish at number 1. I don't think it's an utmost requirement from South Africa, but if South Africa do win today, it's probably going to seal them towards the top 2 positions. Right now they have 10 points. They've not fully qualified into the semi-finals. You need 14 points to completely go through into the next semi-final. You completely relax then that you are in the semi-finals. South Africa have 10 points at this moment. They've lost only 1 match and they've won 5 matches. What is going to cement their position into the semi-finals is going to be a win in the next 2 games that they play, possibly this one against New Zealand, and then of course you've got other games of South Africa coming up as well. You have a match of South Africa with India, which is going to be the toughest match South Africa is going to play in this tournament. Then they have a match against Afghanistan, so they're definitely going to win against Afghanistan. So even if they play in a very relaxed kind of a manner, probably would want to let go of today and just say, they don't try that much hard in this match that is taking place against New Zealand today, and they lose it. And they lose against India also. But they win against Afghanistan. They get 12 points. However, 12 points still are not that much very safe. Pakistan is actually, right now we are aiming Pakistan to qualify for the semi-finals on mere 10 points. So, how is 12 points not enough? However, Afghanistan, the last match that South Africa is going to play, Afghanistan is a team that is capable of creating all kinds of upsets. South Africa better not take any chances. Against India, they might not have a chance to win, but against New Zealand, they can. Against Afghanistan, they should. So it's a kind of a must-win for South Africa also, I will say. For New Zealand, it definitely is. New Zealand, it definitely is. They've got 2 very tough games up ahead. They wouldn't want to take any chances. So it's interesting, and let's just hope that it's a good game of cricket. However, from a Pakistan standpoint, from the standpoint of Pakistan, to stay in this tournament, I'm not saying to qualify even for this. Let's see who qualifies for the semi-final. But to stay in this tournament till the last match,
आखिरी मैच तक पाकिस्तान टूर्नामेंट में रहे, मेरी बस ये ख्वाहिश है। बेशक आखिरी मैच के बाद पता लगे कि पाकिस्तान नहीं आगे जा रहा, ओके फाइन यार, कम से कम आखिरी मैच तक पाकिस्तान टूर्नामेंट में तो रहे ना। तो टूर्नामेंट में रहने के लिए, वर्ल्ड कप में रहने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि आज का मैच साउथ अफ्रीका जीते न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड आज का मैच हारे, ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में रहे। हाँ, आज न्यूजीलैंड अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान को बाहर नहीं हो जाएगा, लेकिन 50% चांसेस इन माय ओपिनियन पाकिस्तान के कम हो जाएंगे आगे जाने के या वर्ल्ड कप में रहने के। जल्दी बाहर हो सकता है फिर पाकिस्तान। वैसे तो अगला मैच ही न्यूजीलैंड से हार जाए, 2-3 दिन के बाद है अगला मैच ही अगर ये 2-3 दिन के बाद न्यूजीलैंड से पाकिस्तान अगर हार गया तो वहीं पे ही वर्ल्ड कप से बाहर, ख़त्म, एंड ऑफ स्टोरी। So let's see what happens. I'm just hoping that South Africa will win. And I've got a, you know, my heart says that South Africa should win. My mind says it won't. That feeling says it won't. Sixth sense carrier, साउथ अफ्रीका हार जाएगा। और बड़ी बुरी होने वाली है पाकिस्तान टीम के साथ इस दफ़ा, इसलिए बाबर आजम के साथ भी बुरी होनी है। अगर वर्ल्ड कप में एंड तक पाकिस्तान की टीम रही, पहले ये टीम ना निकली, पाकिस्तान की बार ना हुई, तो फिर जिस किस्म का डिज़र्विंग ट्रीटमेंट इनके साथ होना है जब ये पाकिस्तान वापस आएगी, सारी टीम जो है, बाबर आजम और के सारे ये जो गए हुए हैं चूतिए लोग सारे पाकिस्तान टीम के, ये जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर वो जो डिज़र्विंग ट्रीटमेंट इधर मिलना है ना इनको, और वो जो सफाया होना है, वो फिर कैसे होगा कि जी वर्ल्ड कप के एंड तक तो ये टूर्नामेंट में ही थे, वो आराम से इस पर दे विल बेसिकली प्रिटेंड अंडर द गाइज ऑफ ऑल ऑफ दिस, बट नोबडी विल स्पेयर बाबर आजम दिस टाइम, लेट मी टेल यू, nobody will spare unless and until by virtue of some miracle Pakistan does qualify for the semi-final, they win the semi-final, qualify for the final of the World Cup also, फिर बचत है बाबर आजम की, वरना नहीं है भाई, वरना नहीं है। End of video, end of story. I'm going to post another video post-match today after this match. Important game, South Africa, New Zealand. Let's see what happens.